नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। नवीन संसदेत पंतप्रधानाचे पहिले भाषण। संसद हे लोकशाहीचे नवे मंदिर असल्याचे उघड झाले। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। शहरातील मिरुक बोनाला उत्सवाची सुरुवात। पोचम्मा मंदिरात भाविकांची गर्दी। आजच्या सविस्तर बातम्या। प्रतिष्ठापणे बांधलेल्या संसदेची नवीन इमारत सुरू झाली। वैदिक मंत्र उच्चारात संसदेच्या इमारतीची सुरुवात झाली। पंतप्रधान मोदी आणि सभापती ओम बिर्ला यांनी विशेष पूजा केली आणि इमारत राष्ट्राला समर्पित केली। त्यानंतर संसदेच्या नवीन इमारतीत पहिली बैठक पार पडली। संसद सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात पंतप्रधानाचे स्वागत केले। नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी पंतप्रधान मोदीच्या हस्ते 75 रुपयाच्या नाण्यांच्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले। हा दिवस इतिहासात राहील आणि हे लोकशाहीचे नवे मंदिर असल्याचे पंतप्रधान यांनी सांगितले। टीएसपीएससी प्रकरणात एक नवीन टोळी समोर आली आहे। सीट अधिकाऱ्यांना वीज येई पेपरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हात बदलण्याचे आढळून आले आहे। विद्युत विभागाचे कनिष्ठ सहाय्यक रवी किशोर यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे।
कारण त्यांनी वरंगल विद्युत विभागाच्या डीईवर संशय व्यक्त केला आहे। 20 जणांना प्रश्नपत्रिका विकल्याचे सीट अधिकाऱ्यांना आढळून आले। डीईआरटीसी क्रॉस रोड येथील कोचिंग सेंटरमध्ये काम करत आहे। तेथे आलेल्या उमेदवारांशी डीईने संपर्क साधला। सीट सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांवर लक्ष केंद्रित करते। सीट अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आतापर्यंत 43 जणांना अटक करण्यात आली आहे। टीएसपीएससी प्रश्नपत्रिका फुटल्या प्रकरणी सीट अधिकाऱ्यांनी आणखी 3 आरोपींना अटक केली आहे। त्यात उप्पल येथील भरत नायक, वरंगल येथील पासीकांती, रोहित कुमार आणि गडेसाई मधु यांचा समावेश आहे। नकीकेर येथील पुला रवी किशोरने या तिघांना प्रश्नपत्रिका विकल्याचा निष्कर्ष एसआयटीने काढला। त्यासाठी 3 लाखाचा करार करणाऱ्या भरतने 1 लाख ॲडव्हान्स दिल्याचे पुरावे गोळा केले। सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। प्रत्येक जण हे असे अन्नदान करू शकत नाही। तरीही या लोकांमध्ये एक लोक असे आहे, कंदी श्रीनिवास रेड्डी। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी शेकडो लोकांची सतत भूक भागवून आपले मोठे मन दाखवत आहे आणि लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे। टीआरएस నుంచి నడికని దివాకర్రావు సెట్టింగ్ కాగా ఈసారి మాట్లాడుతున్న నిర్ణయం మీద అభివృద్ధి ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి। टीडीपी पक्षाचे राज्य अधिकारी प्रतिनिधी अल्लूरी राज रेड्डी म्हणाले की राजकीय क्षेत्रात तेलुगू लोकांच्या स्वाभिमानासाठी तेलुगू देशम पक्षाची स्थापना करणारे आदरणीय स्वर्गीय एनटीआर रामाराव सत्तेवर आले आणि त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली। तेलुगू देशमचे संस्थापक आणि माजी मुख्यमंत्री एनटीआर यांचा जन्मशताब्दी सोहळा रविवारी पक्षश्रेष्ठींनी मोठ्या थाटात साजरा केला। आदिलाबाद शहरातील एनटीआर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली। त्यानंतर पक्षाच्या ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले। ते म्हणाले की गरीब लोकांसाठी अनेक नवीन सरकारी योजना आणल्या आहेत। त्यांनी केलेली सेवा ही इतिहासात अजराम होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। चंद्रबाबू गारी नायकत्व रासायनिक एनटीआर
अमर है एनटीआर अमर है नारा चंद्रबाबु गारी नायकत्वम ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మరి తెలుగు ప్రజలందరూ ప్రపంచంలోనే కాదు మారుమూల గ్రామాలలో కూడా తెలుగుదేశం యొక్క ఖ్యాతిని వ్యాప్తి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో మరి గౌరవనీయులు కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారి పుట్టినరోజు కాబట్టి ఆయన పార్టీని ఏర్పాటు చేసి 42 వసంతాలు పూర్తిగా వస్తుంది. మరి ఆ టైంలో కూడా శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం మన అందరి అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. भाजप नेत्यांनी स्वार्थी राजकारण टाळावे आणि लोकांच्या कल्याणाची इच्छा ठेवावी असे BRSचे ज्येष्ठ नेते आणि आदिलाबादचे MPP गणरट रमेश यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषद भाजप नेत्यांच्या वृत्तीवर जोरदार टीका करण्यात आली. रेणुका सिमेंट कारखान्याच्या प्रकरणात विनाकारण आवाज उठवून असून आमदार जोगुरामण्णा यांना त्यात ओढून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे. या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे की जोगुरामण्णा यांनीच त्या सुमाराच्या बाजूने उभे राहून त्यांना योग्य किंमत मिळवून दिली होती. बिनबुडीचे आरोप करून भाजप नेत्यांनी स्वतःची बदनामी करू नये असा सल्लाही त्यांनी दिला. గత పట్టాలి ప్లాంట్ నిర్మాణం కోసం 107 ఎకరాల చిల్లర భూమి ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసుకొని ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం కోసం వారు కూడా ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అటువంటి ప్రైవేట్ ఇష్యూని గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి పేరుని మాటికి ఎమ్మెల్యే గారే చేసిండ్రు, ఎమ్మెల్యే గారే దీంట్లో బాధ్యులు, ఎమ్మెల్యే గారికి సంబంధం అన్నట్లుగా ఎమ్మెల్యే డౌన్ అని అక్కడ నినాదాలు చేసుడు, जोगुरामण्णा गाరు డౌన్ అనుడు ఎంతవరకు సమంజసము? आदिलाबाद मिरुकबोणाला सुरुवात झाली आहे. शहरातील अनेक पोचम्मा मंदिरमध्ये भाविकांची गर्दी आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या शेवटी पोचम्माला जल अभिषेक करून बोनं टाकले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून रामनगर येथील पोचम्मा मंदिरात पहाटेपासूनच भाविकांची गर्दी केली आहे. त्यांनी पोचम्मांना बोनं देऊन प्रार्थना केली. असे केल्याने माता पोचम्मा आपल्याला सुखी ठेवेल आणि पिकाची भरभराट करेल अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. तसेच अम्माचा आशीर्वाद त्यांच्यावर राहील आणि आयुष्यभर आरोग्य लाभेल अशी भक्तांची भक्ती आहे.
बादी गावात सांस्कृतिक परंपरेनुसार सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन जोरदार सामूहिक प्रयत्नाने पोचम्मा मातेच्या नवीन मंदिराची मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली। ढोल ताशाच्या गजरात सर्व ग्रामस्थ मुख्य कार्यक्रमात पोचम्माची मूर्ती घेऊन आणली। नंतर त्यांनी सर्व महिलांनी मिळून बोनं टाकली। यावेळी गावाचे उपसरपंच दंतेला विनोद म्हणाले की गावकऱ्यांच्या सहकार्याने पोचम्माचे नवी मंदिर बांधले आणि दुग्ध पिकांची भरभराट व्हावी आणि पोचम्माचा आशीर्वाद गावावर राहावा अशी प्रार्थना केली। బాది గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించినటువంటి పోచమ్మ ఆలయాన్ని ఈరోజు శంకుస్థాపన అదే వాస్తు చేయడం జరిగింది। గ్రామస్తులంతా కలిసి వారి వారి ఆడపడుచులను పిలిపించుకొని గ్రామస్తుల సహకారంతో ఈరోజు అలాగే పోచమ్మ పండుగ కూడా చేయడం జరిగింది। ఇందులో గ్రామస్తులందరూ కూడా ఆడవారు మగవారు అందరూ కూడా పాల్గొని ఒక పండగలాగా ఈరోజు మా బాది గ్రామంలో చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి మా గ్రామస్తులందరూ సహకరించి ఇంత పెద్ద పండుగ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। नवीन संसदेत पंतप्रधानाचे पहिले भाषण। संसद हे लोकशाहीचे नवे मंदिर असल्याचे उघड झाले। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। शहरातील मिरुक बोनाला उत्सवाची सुरुवात। पोचम्मा मंदिरात भाविकांची गर्दी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।